Good morning, friends. Once again, welcome to another episode of Wonder Minds. This time I have decided to venture north of Andaman Group of Islands, and generally they say, contrary to the common belief, northern group of islands are much beautiful and much more scenic and less touristy than the southern group of island or uh, the Havelock or the Nile, generally where tourists go. So this time I've decided to take you all to explore to a journey to certain places which very less people do visit, yet it offers a variety of flora and fauna and a plethora of natural beauty that Andaman has to offer. It will be almost 3 days trip. So I'll cover it in two parts, part one and part two. Today the journey is starting. It's almost now 4 o'clock. We are ready to go. Uh, we'll be covering mainly two places in this particular trip. One is Baratang, the other is Rangat. These two places will be our base. In the part 1 of the video, I'll cover the Baratang and associated place around. And in the next part that will come, I will take you all the places around the Rangat. Well, let me explain you slightly the map of Andaman. Port Blair is in the northern group of island and Nicobar in the southern group of islands. We are talking about the northern group of islands, that is Port Blair. Among this northern group of islands, Port Blair sits in the southern part, and the northern part is the Diglipur, and there is a Andaman Great Trunk Road that connects from the southern part of Andaman, southern part of northern group of island of Andaman to the northernmost part of Andaman, that is from Port Blair to Diglipur. We will be going to first Baratang, which is around 120, 130, 40 kilometers. Then further around 70 kilometers is Rangat. Now Rangat is the middle Andaman. And further almost 100 kilometers is Diglipur, which is the North Andaman. So in this trip we will not be going till Diglipur. We will restrict ourselves till middle Andaman, that is Rangat, mostly because of the paucity of the time. So in today's trip we will go to Baratang. Now the Baratang, there is a slight issue going to the Baratang. Well, it's a tourist place, people do go, but only thing, it passes through a highway which is a Jarawa protected area. So the private vehicle or the buses or in that matter any vehicle cannot go there just like that. So there is a place called Jirkatang which is around 40 kilometers from this place, that is Port Blair. There you need to, all the vehicles need to assemble, then you have to register yourself, your vehicle number, driving license, Aadhaar card, all the details of all the people who are inside the car and the car details are to be entered. Then all the vehicles will be consolidated and moved collectively in a form of convoy escorted by the police jeeps for those 40 kilometers of Jarawa protected reserve area. Once you are out of that protected area, again you have to book out your details in the office there. So that is the process. This convoy starts from morning 6 o'clock and there are 4 convoys go, 6, then 10, then 12, then 2. So you have to time yourself so that you reach Jirkatang accordingly so that you can catch the convoy. If the convoy leaves, then you have to wait for 2 hours for the next convoy. So that is the trick. So we have decided to catch the first convoy, that is 6 o'clock. That is why
we are leaving now, so that we are in time for the convoy. The road is good at patches, though I have not been, but I heard that road conditions is not very good, and there are broken roads. And during the convoy, you're not supposed to take any photographs. You're not supposed to stop. You're not supposed to overtake. It's a continuous movement. We may come across some of the population of Jarawa, but we are not supposed to stop there. So that is the thing. Once we reach the other end of the Jarawa Protected Reserve, you have to book out, as I said, entering all the details. Then, along with your vehicle, you get into a ferry that will take you across. It's a 10 minutes ferry across the creek, and you will land in the Baratang. This time, our stay is at Baratang Forest Guest House, which DFO is kind enough to get us an accommodation, so that is good. Baratang doesn't have any other accommodation as such, only the government accommodations like PWD guest house or the forest guest house. So most of the tourists, that's why what they do, they go in the morning, see around the Baratang, and come back by the evening convoy back to Port Blair. So it's mostly a day trip. But since we want to see few more places which generally tourists don't go, so we have decided to stay put at Baratang, and next day morning we'll move to Rangat. So in the part 1, I'll bring you all the aspects of reaching Baratang and seeing around Baratang. So that's it for now. Already my coffee is over. Now it's time to start the car and move towards Jiraktang. If we get late, we'll be far behind in the queue and we'll be delayed while getting the ferry on the other end. So without losing any more time, let's go. Best part of early morning drive is that the roads are empty, hardly any traffic. Though it's thought of starting very early morning, but still we got delayed. Let's see what is the situation at the check post. We have come here. There's a place called Jirkatang. Now beyond Jirkatang, it's a tribal area. So there's a police check post. You can lined up here. You have to just as we thought that we got late and we were quite behind the line in the vehicle to get into the boat and the ferry. The first trip for the Lime Cave have already left, so now we have parked our car on this side of the creek, and we ourselves only got into the ferry to cross over. Now it is almost 10:30. 11 o'clock is next ferry, next boat which will be going to the Lime Cave. We'll get into that. We'll come back in the afternoon and then we'll get our vehicles ferried to this side of the creek. We got into our speedboats and we are going towards the Lime Cave, which is the first destination of our trip. The waterway almost through the mangroves. Right now we are slightly on the open kind of a creek, and it's a speedboat. It takes around 40 minutes to reach the place from where you have to walk down to the Lime Cave. These speedboats are generally carry 8 to 10 passengers. The charges
here is 900 rupees per passenger. So here we have come inside the creek. You can see the bridge. Will go under the bridge and the speedboat will get parked there, and then we'll walk into the forest. There is a small walkway which are made, which will go to the particular village where the lime cave is there. You can see the small jetty kind of a thing at the far. Our boat will stop there and we'll start walking. This is a path which is forest path through the forest. Though the trail is very well marked, so there is no way one can lost his way. And one more thing, today being a rainy day, it was raining quite heavily earlier. Now the rain has stopped, so the road is slightly muddy and slippery, so we need to be careful. At the hindsight now, I feel that since we got delayed there, it was better because the rain has stopped now. We are able to walk much more comfortably. Well, we have reached the entrance of the lime cave. From here you can see the rock structure has already started. ये जो ट्री दिख रहा है, यहाँ सब लोग का केव शुरू हो रहा है। केव का जो लेंथ है सर 100 मीटर का केव है। 100 मीटर का केव में से 60 मीटर ओपन केव है। ओपन केव सर जो है डेड हो चुका है। जो आप ब्लैक स्टोन देख रहे हैं ना, ये मैडम डेड हो चुका है। तो इसमें डेड होने का जो रीज़न है, डायरेक्टली रेन वाटर सनलाइट स्टोन पर लगता है तो स्टोन जो है डेड हो जाता है। तो आप लोगों को 40 मीटर ये लाइमस्टोन केव देख लो। 40 मीटर में जो है सर पूरे वाइट कलर का स्टोन होगा। सारे स्टोन जो है एक्टिव पार्ट है, धीरे धीरे ग्रो करें। और ये केव जो है सर फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोनेट कैल्शियम वाटर डिपॉजिट। आप लोग केव के ऊपर देखोगे तो आपको काफ़ी सारी ट्री नजर आएगी सर। ट्री के जो रूट्स होते हैं, रूट से जो प्योर वाटर ड्रॉप आता है, तो वाटर के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट ड्रॉप होते होते हो धीरे धीरे स्टोन ग्रो करता है। तो 40 मीटर केव में जाएंगे तो सर वहाँ पर आप लोग को अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलेगा। देखकर आप लोग जैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं। और 40 मीटर केव में हम लोग किसी भी स्टोन को टच नहीं करना है। हम लोग का बॉडी टच होता है तब भी स्टोन जो है सर डेड हो जाता है। और ये 60 मीटर जो है रेन वाटर एंड सनलाइट से खराब हो चुका है, ठीक है। तो केव में टोटली 3 तरह के स्टोन होते हैं, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और एक होता है हेलेक्टाइट, जो कि ऊपर नीचे से ग्रो करते हैं, ठीक है सर। बाकी मैं आप लोगों को अंदर पे बताऊंगा, ठीक है। मोबाइल लाइट वगैरह होगा तो ऑन कर लीजिएगा अंदर। किसी भी स्टोन को हम लोग टच नहीं करेंगे, बिना टच करे अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अंदर जो आप लोगों को डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ नजर आएगा। जैसे आप लोग देख कर इमेजिनेशन कर सकते हैं। सारे जो है नेचुरली बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है। तो यहाँ आगे आ जाइए, यहाँ से आप लोग ऊपर कॉर्नर पर देखिए, आगे आगे इस तरफ सर, यहाँ से देखिए, ये देखिए ऊपर देखोगे, कॉर्नर पे देख लिए तो वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नजर आएगी, स्पैनल कोड। हमारा बॉडी में जो रीढ़ की जो हड्डी होती है ना सर, उसकी शेप में स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, देख सकते हैं आप लोग। जैसे जैसे वाटर ड्रॉप होता है सर, वैसे वैसे स्ट्रक्चर बनता रहता है, चेंज भी होता रहता है। और उसी के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको गणपति पप्पा जी का जो सूंड होता है ना, उसकी जैसे लग रहा है सर, गणपति पप्पा जी का, विनायक जी का, ठीक है। आगे भी इसी तरह आपको बहुत सारी स्ट्रक्चर वगैरह होंगे। ये पूरा स्टोन आपको जेलीफिश की शेप में नजर आ जाएगी, वैसे लग रहा है। और वहाँ पर देखोगे तो ऑक्टोपस, जो सी वाटर में ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस जेलीफिश की स्ट्रक्चर। ये लाइमस्टोन केव भी जो सर बहुत साल पहले जो है अंडर वाटर ही हुआ करता था, पानी का। हाँ सर, यहाँ पर देखेंगे ना तो सर आपको यहाँ पर शाइनिंग करता हुआ स्टोन नजर आएगा सर। ये जो है सर सिलिका एंड माइका कारण यहाँ पर आपको शाइनिंग देखने को मिल रहा है। ये शाइनिंग आपको हर जगह पर देखने को नहीं मिले सर, ये बस कुछ कुछ जगहों पर ये शाइनिंग करता है, जहाँ पर भी ज़्यादा मात्रा में होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो जो सर शंख की स्ट्रक्चर में आपको नजर आ जाएगा। जो मंदिरों में जो शंख बजाते हैं ना, जो सी वाटर में होता है, ये स्टोन देख सकते हैं आप लोग, पूरे शंख के आकार का बना हुआ है। और यहाँ देख लीजिए, जो ब्लैक स्टोन दिख रहा है ना सर, सब हमारा लोग टच करके जाते हैं तो इस तरीके का ब्लैक हो जाता है, इसका फॉर्मेशन होना सब बंद हो जाता है। अब ये स्टॉप हो गया। हाँ सर, यहाँ पर देख लीजिए,
केव में टोटली 3 तरह के स्टोन होते हैं सर। यहाँ पर आपको 2 टाइप का स्टोन देखने को मिलेगा। इसका फॉर्मेशन जो है सर दोनों तरफ से धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और बीच में जो आप लोगों को कुछ गैप दिख रहा है ना सर, इसे जुड़ने के लिए भी बहुत साल लगेंगे, क्योंकि स्टोन जो है सर 1 साल में ½ इंच या उससे भी कम तक का ग्रो करता है, बहुत स्लोली बढ़ता है सर। ये जो ऊपर से जो बढ़ता है उसे स्टैलेक्टाइट स्टोन कहते हैं, जो नीचे से बढ़ता है उसे स्टैलेग्माइट स्टोन कहते हैं, और एक होता है हेलेक्टाइट, वो अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो पूरा जियोलॉजी पढ़ देगा। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ देखिए रूट से जो प्योर वाटर ड्रॉप आ रहा है, तो वाटर के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट ड्रॉप हो रहा है सर। ड्रॉप होता है तो जमते जमते धीरे धीरे स्टोन ग्रो करता है। वाटर ड्रॉप बरड़ा, ये जो है सर प्योर वाटर है, ये डायरेक्टली रेन वाटर नहीं है सर। डायरेक्टली रेन वाटर आता है तो स्टोन डेड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए जो सिंक होल का बोर्ड लगा हुआ है सर, आप लोग ऊपर की ओर देख लीजिए, आप लोग को 2 हॉल नजर आएगा। 2 हॉल सर, ये जो है सर नेचुरल हॉल है, केव में अपने आप बना हुआ हॉल है, किसी ने बनाया नहीं सर। तो केव से सर जो है हमारे केव के अंदर में ज़्यादा कभी कभी भीड़ भड़क हो जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल वगैरह कम हो जाती है, तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन यहाँ से आती है, सनलाइट वगैरह, और बाहर की साइड से आ रहा है, और पूरे केव में आगे जाएंगे तो हर जगह से कवर है। और हॉल से जो है डायरेक्टली रेन वाटर भी अंदर पास हो रहा है, तो स्टोन देख सकते हो पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक काला पड़ गया, और मड भी आ रहा है, तो आपको यहाँ पर गोल्डन पे देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ पर रेन वाटर पड़ता है तो स्टोन जो है सर डेड हो जाता है। नहीं हंसने की बात है नहीं मामा, नेचुरली कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया है हम खुश हो अच्छी तरह से डालो। अभी समझ यहाँ में पर नहीं देख सकते हैं सर, यहाँ पर आपको रिवर्स लोटस की स्ट्रक्चर में नजर आएगा। लोटस कमल फूल की जो फली होती है ना, उसकी शेप में स्टोन देख सकते हो, अभी रिवर्स में उल्टे से उल्टा पड़ रहे हैं, रिवर्स कमल रिवर्स लोटस। और यहाँ पर देखेंगे तो शिवलिंग के जैसा दिख रहा है, उसके बीच में देखिए छोटा सा आपको गणेश भगवान जी की मूर्ति की स्ट्रक्चर में नजर आएगा, गणपति बप्पा जी का फेस कट के चीज में। हाँ तो सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूरे केव में यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर का स्टोन नजर आएगा। ये जो आपको गोल्डन कलर पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर। इसका जो गोल्डन होने का जो रीजन है, ऊपर में एक छोटा सा सिंक होल है, होल से जो है वाटर के साथ में रेत और मिट्टी अंदर आ रहा है सर, अंदर आके पूरे स्टोन पर जम गया, इसलिए इसका कलर यहाँ पर चेंज हो गया। और यहाँ पर अभी छोटा सा देखोगे तो यहाँ पर आपको हनुमान जी के हाथों में जो गदा होती है ना, ये आपको गधे की शेप में नजर आ जाएगी। सारे स्ट्रक्चर जो है नेचुरल है, ये बढ़ता रहता है, धीरे धीरे चेंज भी होता रहता है। और यहाँ देखेंगे तो ऊपर भी आपको टाइगर का जो फिंगर होती है, फिंगर की शेप में नजर आ जाएगी, टाइगर खुला। हाँ टाइगर का पंजा। और इस साइड तो सर लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है जो हम लोग को जाना अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पर 2004 में जब भूकंप आया, इस साइड का स्टोन देख सकते हो पूरा क्रैक हो चुका है, क्रैक होकर इससे डालू हो चुका है, तो डेंजरस पार्ट है, इसलिए हम लोग उधर अंदर जाना अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऊपर ये जो स्टोन देख सकते हैं, आपको एकदम प्योर व्हाइट में नजर आएगा सर, मिल्की व्हाइट में। ये पूरा जो सर जो है न्यू फॉर्मेशन है, न्यू फॉर्मेशन इस तरीके का मिल्की व्हाइट में होता है सर। ये बस आपको कुछ कुछ जगहों पर ही देखने को मिलेगा। और ये साइड जो दिख रहा है छोटे छोटे आकार में, वो पूरा हेलेक्टाइट स्टोन है सर। इसका जैसा फॉर्मेशन होता है तो जैसे झूमर होती है, झूमर के आकार का बढ़ेगा सर, हेलेक्टाइट बोलते हैं उसको। और स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट डायरेक्टली बढ़ता है, जैसे वहाँ के See the interesting part. They have used shells, not the stones, to make the road rough so that you don't slip on the road when it becomes rainy. Quite interesting. A small lime water stall being put up by local villagers. It's quite fresh. I urge the tourists to buy from there so that it will help them for the local economy. आपके इस विलेज का नाम क्या है? नया डेरा। हाँ नया डेरा। अब अगर सब सामान तो उधर से ही आता होगा ना, बोट से ही आते हैं। ये नींबू यहीं का होगा ना? मार्केट से भी लेके। Well, now the time to go back by the same route that we came, a small walkway right up to the small jetty where our boat is waiting. We almost spent around 2 hours. 2 hours is good enough time to spend the time inside the lime cave, understand the structures. If you want, you can interact with the very small village. Only 8 families are there in that Naya Dera village, which is there next to the lime cave. There is an interesting story how this lime cave is discovered. It seems there are a tribe
which were looking for a particular edible nest of a bird. In search of that nest, which generally are available at this part of the land, they stumble upon this particular cave, and that's how it came into. People have come to know about this particular place. After this, our next destination is another unique thing of this place is Mud Volcano, which is around 5 kilometers from the point where we took the boat. So we'll go back to the place, get down from the boat, and then we'll drive to the place where the Mud Volcano is. Yes, we have reached the entrance of the Mud Volcano. There's a parking space, ample parking space is available. You can park the vehicle, then you have to walk down. These mud volcanoes are the very few active ones which are there in India, and it's a very surreal geological features. And as people say, it has started after the famous tsunami that happened in this Andaman region. Not able to see the volcano, only they call it, must be there somewhere. Let me check where it is. You can see the fresh mud has just come out. You can hear the sound and see the bubbles as well. You can see the bubbles. Yeah. Fresh bubbles are coming out. Since we have time, we are going to stay put at Baratang tonight. So we are headed to the Baludera Beach. Unlike the crowded beaches of Andaman, this one is often empty and lined with massive mangrove trees and crystal clear water. Local people do come here just to chill out. Today there is not much of a crowd. You can spend some quiet time around. And that wraps up our incredible action-packed day in Baratang. From the mysterious limestone caves to that of surreal mud volcano, this island truly feels like a different world altogether. But believe it or not, our Andaman adventure is only just getting started. This was only a part 1. In my next video, I am taking you somewhere even more magical. We are heading to the pristine, untouched beauty of Long Island. You definitely don't want to miss the crystal clear waters and the hidden gems we found there. If you enjoyed this journey through the heart of the forest, please hit that like button, share this video and with your fellow travel enthusiasts, and make sure you subscribe to Wonder Minds with notification turned on so that you don't miss the release of part 2. Stay tuned, keep exploring, and I'll see you in the next one.